Hello guys, what's up? How are you? All good? Today's lecture is totally basic. जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. In 12th we have to study basically three parts: magnetism, modern physics, optics and wave optics. So the topics of 12th are a bit tough, but don't you worry guys, I will make sure that we will learn each and every funda and feel it. यार खून खून में फिजिक्स बहना चाहिए, है ना. तो एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेसन करेंगे वो कुछ ऐसा डिवाइड हुआ रहेगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड गॉस लॉ वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन टॉर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर. ओके, मैग्नेटिज्म, ठीक है. तो सब जगह रहेंगे पूरे लेक्चर में, कोई भी मेंटली एब्सेंट नहीं रहेगा. जैसे कि हम जानते हैं कि 11th का पूरा जो है वो मैकेनिक्स में फील आता है. एनएलएम, फोर्सेस, ब्लॉक, पुली, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी वगैरह वगैरह, पहिया, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, एसएचएम. इसका मतलब 11 में जो चीजें दिख रही होती है मैकेनिक्स में वो चीजें हो रही होती है. बट इन 12th में जो भी आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे अनसीन होगा, क्योंकि इसका जो की पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू चार्ज. और इन 12th totally you have to study about the charge. Okay, so the smallest unit of charge is electron. That means we have to study about electrons. But electron को हमने कभी देखा नहीं है. We does not seen any electron. But by properties and nature we can feel. So that's why imagination is important. Electromagnetism is the study of charge, study of charge. As you know that, electro means, electron. So, got my point. So basically आप पढ़ोगे charge. So, and charge का सबसे छोटा यूनिट या पार्टिकल जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है. So we assume that the smallest unit of charge is electron, or the value of that is, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, बात कहना चाह रहा हूं कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हमने कभी देखा नहीं है, बट ऐसा कभी हुआ कि दिल में ख्वाहिश जगी और आज पड़ोसी के यहाँ गए और फिर बोले कि भाई साहब मेरे को 200 इलेक्ट्रॉन उधार देना, ठीक है. फिर जो होगा वो तो आप जान ही रहे हैं. इसीलिए जिसको आप पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने देखा नहीं है. सो द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में एंड मैग्नेटिज्म में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. सो जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ रहता है, ठीक है ना, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होती है. जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ रहता है, दिस प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ने वाले हैं चार्जिटैट. चार्ज जो होगा वो रेस्ट पे रहने वाला है, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैट में हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे. वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. एंड मैग्नेटिज्म में व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, when the charge particle is moving with constant velocity, it means that is it will produce both electric and magnetic field. So over there we have to learn about magnetic effects of current, a little bit magnetism, bar magnet, etc. Okay, and when charge is accelerated, that is, ठीक है, when charge having the some velocity, that means rate of velocity is called acceleration. When charge particle accelerated, that means it will produce both electric and magnetic field, and it will also radiates energy. Suppose one of the best example of that, X-rays. Broken bones में जो हमें X-ray करवाना पड़ता है, उसके लिए हमें electromagnetic waves की जरूरत होती है, because X-ray is although a electromagnetic wave. So इसमें क्या होता है, बेसिकली हम हाई वेलोसिटी या हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पे, ठीक है ना, बम्बार्ड करते हैं, एंड आफ्टर दैट इट विल डिसेलरेट एंड द सरफेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एजैकुलेट फ्रॉम द सरफेस एंड it will
ठीक है ना, had some energy and that packets are called quanta, and with the energy they will circulate is called electromagnetic waves. So exactly we will see whatever. So basically it is a hypothetical concept, so इसको चिपक के दिल से नहीं लगाना है. And now we will start the electrostatics, but we will learn about the property of charge. Okay, basically आप जानते हो ये, ठीक है, फिर भी बताना हमारा धर्म है. So according to that, क्योंकि electrostats is the study of charge, as you know, electrostats is the electro means electron and stats, you know, at rest, state of rest. So study of charge at rest. Okay, so now the electronic charge. Okay, तो बेसिक फंडा की बात करेंगे. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. So the basic concept is so simple, as all know, charge and there are two types of charges, that is positive charge and negative charge. Okay, so plus Q and minus Q. So as you know, positive charge, it will say that there is a deficiency of electrons, and negative charge particles, it will say that there is an excess of electrons, and the unit is SI unit is, that is ampere second, और इसको कूलम के नाम से जाना जाता है. And the dimension is ampere, that is current का ampere and time का t, so it is the dimension. Physical units of charge are ampere hour, that is equal to, ठीक है ना, 3600 coulomb. And Faraday is also a unit of physical charge. The value is 96500 coulomb, 1 Faraday. So exactly, first of all, Macmillan has calculated the quanta of charge. Quanta, that means, you know, a small packet of charge. CGS unit, you can basically say CGS units are, ठीक है ना, stat coulomb, ठीक है, and the relation between coulomb and stat coulomb, that is 1 coulomb is equal to 3 into 10 to power 9 stat coulomb. Okay, and although absolute coulomb, 1 absolute coulomb is equal to 10 coulomb. Okay, although next we will deal with the properties of charge. As you know that, first of all, charge is a scalar quantity, so because of, you know, the algebraic sum, and it will follow the additivity nature, ठीक है ना. Suppose 2 coulomb, 2 micron coulomb and 5 micron coulomb. अगर आप किसी बॉडी को देते हैं, ठीक है ना, इनिशियली मान लो ये न्यूट्रल बॉडी था, and after that you have given some charge, that is 2 coulomb, 2 micron coulomb, and after that, you know, you have given 5 micron coulomb. So total right now it's 7 micron coulomb. And now again, if you want to receive some charges over there, so, and also next you have transferred minus 5 micron coulomb charge. Okay, then again it will become 2 micron coulomb. So basically the two properties are here. So charge is transferable. Okay, so we can transfer charge by 3 methods, as all know: conduction, induction, and by friction. Okay, next property is, that is similar charges, similar or like charges repel, and unlike charges attract. That means if positive tends to positive, it will repel, and negative tends to negative, it will repel both too. And unlike charge attract, that means positive will attract negative, and also negative will attract positive, and vice versa. And although the smallest unit of charge, what is the smallest unit of charge? That is electronic charge.
Okay, because electron contains electronic charge, so one electronic charge is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, so this is the value of charge. And somehow we will see the property also, the mass of electron. What is the mass of electron? Mass of electron is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg. Exactly. And what is the mass of proton? Mass of proton is equal to 1.67 into 10 power minus 27 kg. Somehow it is very much equivalent to the mass of neutron also. Okay, so all the basic terms we have discussed ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में बाद में तकलीफ ना हो. So right now next property is very much important, that is quantization of charge. So it is the property, okay, that is very much important. If I say that any body is neutral, that means what? उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? यस, होगा. न्यूट्रल मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. अगर एक एटम की बातें करें, सपोज विल डिस्कस अबाउट द वन एटम. एक एटम की अगर बातें करते हैं, एटम का जो है वो न्यूक्लियस होता है, सबको पता है न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है, ठीक है. और उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन देयर ऑर्बिटल एंड शेल, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. सो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम? एटम हैज सेम नंबर ऑफ protons, a neutral atom is equal to same number of electrons. Okay, so the body is made with atoms. So exactly what does it mean? If a body is neutral, that means same number of positive charge is equal to same number of negative charge. Suppose I have taken two neutral body. Okay, what I do, I will make transfer 10 electrons. I will make transfer 10 electrons from body A to B. Initially both are neutral. Now we're gonna transfer 10 electrons from body A to B, and this have an excess of 10 electrons, so it will gonna negatively charged. And there is a deficiency of 10 electrons, so it will gonna positive charge. So this is plus 10e and this is minus 10e. Okay, so how much amount of charge can be transferred? So you will say 10 electrons, so 10 into e. That means somehow charge is connected to the number of electrons. So that's the theory of quantization of charge. What it says? It says about the amount of charge is always equal to the integral multiple of the electronic charge. The amount of charge is always equal to the integral multiple of electronic charge. So what is the integral multiple? That means n into e. So q is equal to plus minus ne. Q is equal to plus minus ne, where you know that n is a positive integer or negative integer. So n is an integer. The value varies from 1 2 3 4 4 and goes to whatever. And electronic E returns to electronic charge. The value of electronic charge is equal to plus minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Okay. Next property is charge is conserved. That means in an isolated system, the total charge does not change with time, or we can say that is charge can neither be created nor be destroyed, as you know.
ठीक है. It can be transferred from one in the term of free electrons or electronic charge. ठीक है ना. As you saw, the amount of charge particles can be transferred as the theory of quantization of charge. So that's why charge is conserved. And next is charge is invariant. That means charge is independent of frame of reference and it does not change with respect to speed. Okay. Next, we have seen that the charge particle produces electric and magnetic field. So, whenever charge particle is at rest, it will produce electric field, and whenever charge particle is at moving with constant velocity, it will produces both electric and a magnetic field. And whenever charge particle varies with some acceleration or rate of change of velocity, it will produces electromagnetic waves and radiates energy. Okay.